From the Delhi studios of Republic TV, it's time for Arnab Goswami on the debate. Arnab Goswami on the debate at 9. Presented by Amity University. Powered by RP Sanjeev Goenka Group. The new Kia Seltos, Century Laminates, Motorola Razr 40 Ultra, And PolicyBazaar.com. Co-powered by Sera and Maersk. Ladies and gentlemen, good evening and welcome. The 2611 terror plotter, the terrorist who provided the logistical support, the terrorist who closely operated with David Coleman Headley, the terrorist who will, and I'm not even seeing can, the terrorist who will spill the inside details of all those who had a role in the 2611 Mumbai terror attacks. His name is Tahawwur Rana, and he is all set to be extradited to India very soon. I have with me a secret note which has gone from the Pakistan mission in the United States to its consulate in Los Angeles. And the Pakistanis are in absolute panic. I shall read from the note. It says, subject, possible extradition of Tahawwur Rana to India. This is in continuation of the mission's earlier correspondence on the above-mentioned subject. Reportedly, habeas corpus appeal by Mr. Rana's legal team challenging the US District Court's decision to extradite him to India has been rejected. The Consulate General is requested to share developments including the present status of the appeal and future steps with this mission and continue closely monitoring the case. Ladies and gentlemen, what does this mean? This means that the Pakistanis are in absolute panic, and they should be. They should be, because this man will spill the beans on the key conspirators before the whole world. Ladies and gentlemen, he will tell the whole world who was giving the instructions. He will expose the Pakistan state-sponsored machinery involved, and that is their biggest worry. He will talk about all the people beyond David Coleman Headley who he worked with to recce the places in Mumbai and beyond. And more importantly than that, he will also expose the army and Lashkar links, the Pak army and Lashkar links, ladies and gentlemen. And this whole internal communication which I have with me, which is within the Pakistani officials, is revealing the fact that if this man gets extradited, then the entire role of the cowardly country called Pakistan will be up and clear before the whole world. He will name Pakistani army officials. He will expose the Pakistani blood money trail. He will collapse the entire Pakistani narrative on 2611. And Pakistanis will have nowhere to hide, ladies and gentlemen, nowhere to hide. That is a huge development, and the Pakistanis are afraid, and they should be. And I have a great India-Pakistan debate for you in a few minutes this evening, ladies and gentlemen, because I have the internal note of the Pakistanis, which shows the kind of panic that there is in Pakistan over what will be the certain extradition of Tahawwur Rana. That's debate number 1 tonight, viewers. Big debate in a few minutes. Debate number 1, the extradition of Tahawwur Rana and why Pakistan is in panic on that. Debate 2 this evening at 10 o'clock. High drama in the Delhi Assembly over the Manipur debate. AAP versus BJP face-off at 10 p.m. And finally at 10:20 p.m. this evening, is there a race for Hindu votes closer to the elections? We debate at 10:20, 10:25 p.m. And here are the headlines this Thursday evening on the debate tonight. The Republic Media Network accesses the Pakistan Embassy note showing concern over possible extradition of 2611 terrorist Tahawwur Rana. Pakistan wants close monitoring of Tahawwur Rana case. Is the ISI worried over the global expose of its terrorist role? Major controversy in Delhi. 4 BJP MLAs marshalled out for protesting against the Manipur debate in the Delhi Assembly.
कश्मीर पे कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए थे। Former Congress stalwart Ghulam Nabi Azad says everyone was Hindu in India before the Mughal invasion. It's all about the rush for the Hindu vote from Kamal Nath. We are a Hindu Rashtra comment to Azad's Hindu First. Is there a race for Hindu votes ahead of 2024? And major milestone for Chandrayaan 3. The lander separates from the propulsion module. Now the countdown begins for the landing. Ladies and gentlemen, our big story today, the big India-Pakistan debate. 2611 conspirator, his name is Tahawwur Rana, who is languishing in the American detention center, is going to be brought back to India. He is the latest cause of worry for Pakistan. I have an internal note which has been circulated by Pakistan among its diplomats, which has reached us here at Republic TV, which reveals how much panic the Pakistanis are in. They are very closely monitoring the case. It's almost as if they know that when Tahawwur Rana lands up in India, he will spill the beans on everything that Pakistan has done. Pakistanis are helpless. The Americans are by our side in this campaign against terrorism because Pakistan is now down to waging a lone battle. Ladies and gentlemen, let's debate. तहव्वुर राणा का भी केस अंतिम सुनवाई तक पहुंचा है। मुझे भरोसा है बहुत कम समय में बॉम्बे के बम हमले के आरोपी राणा को भारत की कानून की अदालत के तहत लाए। Just 5 days after Union Home Minister Amit Shah's statement in Lok Sabha, Pakistan seems to have gone into a tizzy. Tahawwur Rana would be brought back to India, and that the extradition trial is almost in the final leg. Pakistan went into a tizzy. A proof is this internal communication on 14th of August between Pakistan mission in Washington and Consulate General in Los Angeles, where a specific direction was given to the consulate that they need to closely monitor all developments with regards to Tahawwur Rana, the man who was in touch with David Coleman Headley, the man who was acting at the behest of the ISI. Tahawwur Rana, a close associate of 2611 terrorist David Headley, is believed to be a co-conspirator in the attacks that killed over 166 people in Mumbai. He is currently lodged in Metropolitan Detention Center in Los Angeles after India's extradition request. Pakistan internal email that has now come to light raises questions on whether the ISI is scared of its terror plot being laid bare. Let's debate. Pakistan debate tonight, and with us Gaurav Bhatia of the BJP. We have two Gauravs. Gaurav Arya, Major Gaurav Arya, senior consulting editor, strategic affairs of the Republic Media Network, Colonel Shailendra Singh, foremost defense expert, and Saurabh Shukla of News Mobile. And they are going to hammer the Pakistanis tonight. And the Pakistani side led by Dr. Irshad Ahmad Khan, leader of the PMLN. We have Raja Faisal, journalist, and Major Yasir Janjua, defense expert from Islamabad, and Hamid Khan, strategic affairs expert from Lahore. After a lot of many days, we are back with the India-Pakistan debate, and let me tell you why, Gaurav. Because Tahawwur Rana is coming back, and we are going to catch him. We're going to catch him by his neck. We're going to chain him up. We're going to drag him. We're going to bring him here. We're going to put him in a box, and all TV networks in the country will take his interviews. We will expose these cowards in Pakistan, and they're going to watch, and they're going to squirm, and they're in panic. You've seen the internal note, Gaurav. It says, please do something. There is big trouble. Rana's appeal has been rejected. He is going to be taken to India. Ab kya hoga is written all over this letter, Gaurav Arya. Ab kya hoga? Main aapse pooch raha hu, ab kya hoga? Sabse pehle to Arnab, I think what we need to do is get his name right. It is Captain Tahawwur Hussain Rana of the Pakistan Army. Correct. And he is a Fauji, a Pakistani Fauji. And he took the natural progression line which most Pakistanis Faujis would take. Correct. And he took up terrorism. He joined the Lashkar-e-Taiba.
And now he's coming back and the Pakistani diplomats are in a tizzy. They don't know what to do about it. Because why are they concerned? Arnab, when he comes to India, he'll be given VIP treatment. He will be given VIP treatment. That man is going to be interrogated like nobody's business, and the Pakistanis are worried because he's going to spill the beans. Do you think they'll say he's not a Pakistani? Can they say that? They say that to any Pakistani in trouble. You know, all those guys we caught, they said we're not Pakistanis. Even the 93,000, 1 lakh, I don't know how many of them who surrendered, they said they're not Pakistanis. कोई भी उनका फंस जाता है कहते Pakistani नहीं है. हाँ बिल्कुल. First deny. First denial. Absolutely, yeah? absolutely. Okay, you think Dr. Irshad Ahmad Khan denial करेंगे आप? Captain Tahawwur Rana of the Pakistan Army, right? The man who was the key conspirator of 26/11. Your dirty tricks, your cowardly state-sponsored terrorist machinery. मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी कह सकते हैं, हम आपको जवाब देते हैं, जो सच होता है वो बोलते हैं, लेकिन आप मानते नहीं हैं, क्योंकि आपने मानना नहीं है। कोई मैं जब भी कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा अभी आपने कैप्टन का राग लापना शुरू किया, पहले 6 महीने से सीमा कर रहे थे, फिर अंजू आ गई, अभी ये कैप्टन साहब आ गए, तो कहते जाइए, हम सुनते जाएंगे, हम जवाब देते जाएंगे, हम डिनायल करते जाएंगे, डिनाई करते जाएंगे, आप कंफर्म करते जाएंगे, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम हमेशा ये कहते हैं, देखें मैं ये कहता हूँ कि ये जो धर्म है, ये धर्म इंसान के बनने से बाद पैदा हुआ, सबसे पहले हम लोग इंसान पैदा हुए। आपने हमारे ऊपर एक ब्लेम लगाना है दहशतगर्दी का, टेररिज्म का, सब कुछ लगाना है, लेकिन सर एक बात बताइए, एक मिनट सर, एक मिनट, हम आपके ऊपर हम ब्लेम नहीं लगा रहे। आप 4 बार FATF ग्रे लिस्ट में जा चुके हैं क्योंकि दुनिया कहती है आप दहशतगर्द हैं। इंडिया ब्लेम नहीं लगा रही है, अमेरिकन कोर्ट्स की बात है। दिस इज हैपनिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सर। हम अपनी कारकर्दगी दिखा करके अपने आप को क्लीन चिट लेकर के किस लिए आए कि हम दहशतगर्द नहीं है। आप इल्जाम लगाते हैं सर, आपको क्लीन चिट नहीं मिली है, आप गलत बात मत करिए। इरशाद जी, आपको क्लीन चिट नहीं मिली है, आपको क्लीन चिट बिल्कुल भी नहीं मिली है। आपको 27 पॉइंट्स दिए थे, जब आपने उसमें से 26 पूरे करे तब आपको निकले। पॉइंटेड बात करें गौरव, ये डिस्ट्रैक्ट करने की इनकी आदत है। इसको हम हिंदी में एक तरह से क्या कहा जाए, बेशर्मी कहते हैं। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए इरशाद जी, एक मिनट। माय क्वेश्चन इज, नहीं मैंने बेशर्मी कहा, मैंने आपको बेशर्म नहीं कहा, बट आई मस्ट से कि आपकी one of your qualities is बेशर्मी। आप मेरी बात सुनिए। My question is to Raja Faisal। सिंपल सा सवाल है, Raja Faisal, my question to you is this: is Tahawwur Rana from the Pakistani army or not? Simple question. Is he from the Pakistani army or not? Yes, he served. Because the reality is this, that he served Pakistan army back in days, and then okay, good. Great admission. A Pakistani panelist says yes, he's from the Pakistani army. Thank you, Raja, for the second question. Pakistan, along with his wife, they settled in Canada. Over there, he had a business of immigration and travel agency. And somehow he had a childhood friend. He was called David Hadley. David Hadley used to travel to India, and his statements, if we talk about the Rana's statements are too many mays and mites, and he's been talking about that he was in touch with some Major Iqbal, who maybe was part of ISI, and then later on he said that I always had a friend called David Hadley, who might be intact or in touch with Lashkar-e-Taiba. So his statements are full of may and might and blah, blah, blah. So on these basis, if you think that he will be convicted and he will be extradited to you, then it's, I think, I can't stop you from living in the fool's paradise. Gaurav Bhatia is on the debate. I'd like to go to Gaurav Bhatia, national spokesperson of the BJP. And before I go to him, let me say this, ladies and gentlemen. It's a historical moment as of now because we are getting him back. And Gaurav, these Pakistanis, they can do nothing to stop him from coming back. So they are trying the same old Pakistani trick of deniability.
That's what they always do, and that's what they always will do. Gaurav Bhatia, if that is the case, my question is, why are the Pakistanis in panic? If he is not representing the interests of the Pakistani state, then why are they in panic, Gaurav Bhatia? I will come to the Pakistani for teachers later. Let me first talk about India as a proud Indian. It is truly a historical moment, Arnab. That is why they are so jittery. And I will tell you, when Amit Shah ji assured the nation on the floor of the House that he will have this rogue terrorist, Tahawwur Rana, extradited to India, it was something that India should celebrate. And the reason is very simple. Today, India is a powerful nation. India is resurgent. And we are ensuring that whoever looks at India with an evil eye or sponsors terrorism, no matter where he goes, he may go to the US, he may go anywhere else, but there is no safe haven. घुस के उठाएंगे और इंडिया वापस लाएंगे और उसको अपने मुल्क की ताकत बताएंगे. छोड़ेंगे नहीं दहशतगर्दों को. Can I say something? Second, you know, now I'll come to the Atankvadi, Atankistan. Why is Pakistan so concerned about a terrorist? You know, we have embassies, and these embassies go all out to help the citizens. They build good relation with other countries. They welcome Narendra Modi ji, the head of the states, and it's a proud moment. And look at the Embassy of Pakistan. What are they doing? They are trying to gather information about the extradition of a terrorist. Do you know why? Because today Pakistan's global identity is terrorism and their relationship with terrorists. And अभी एक वक्ता कह रहे थे कि हम लोग सपने देखते हैं. नहीं. इमरान खान, जिसको आपने गायब कर दिया है वर्ल्ड कप के विक्ट्री वीडियो से, उनका स्टेटमेंट है एज प्राइम मिनिस्टर that there are more than 40,000 terrorists on Pakistani soil. And another fact for you, 132 designated UN terrorists are found in Pakistan. So the message is clear. हमारी तरफ बुरी आंख देखी, वो आंख बचेगी नहीं, वो सर बचेगा नहीं. हम भारत हैं, फूंक देंगे तो ये जो टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के, पहले एक हुआ था, अब एक और होगा. And I must also say one more thing. Arnab, the details that I got, there was an appeal filed by this person, and the appeal for extradition that they filed was rejected because it was held that there is sufficient material and evidence presented by India to extradite this terrorist. Now they will not speak on merits because they have none. Today, they are a terrorist nation and they need to be taught a lesson, which India will. I'm proud to be an Indian. Just look at them today. Just look at them today, Colonel Shailendra Singh. I request you, look at the cameras and look at the guests from Pakistan very closely. Let me say something. Look at Major Janjua. Look at Hamid Khan. Look at Raja Faisal. And look specially closely at Dr. Irshad Ahmad Khan. इनको समझ में नहीं आ रहा है कर्नल शैलेंद्र सिंह की हो क्या, क्योंकि यही लोग नहीं. हामिद खान, आप 1-2 साल पहले आते थे प्रोग्राम पे और कहते देखते हैं कैसे तहव्वुर राना आपके कंट्री में आता है. मैंने कभी नहीं कहा. मुझे बात करने दो. जवाब. अच्छा हामिद जी कुछ बोल रहे हैं, आप बोलो. Let me say something please. Thank you Colonel. Thank you please. I am really always get surprised when you say, देखते हैं आपको, how dare you, and you are always in a panic mode. Your pants get wet when it comes to the name of ISI, and you start doing the programs on fake documents and fake. And आपके पास तो पैंटी नहीं है, नंगे घूम रहे हैं आप लोग. On top of it, let me say something now. क्या पैंट कर रहे हो? हमारी जब आर्मी दहाड़ती है तो आपकी पैंट आगे से गीली पीछे से पीली हो जाती है. आप मत बोलिए. 93,000 of your soldiers surrendered. उनकी नाक रगड़वाई थी हमारी सेना ने. क्या पैंट कर रहे हो यहाँ पे? अगर करनी है चर्चा तो तमीज से करो, वरना तुम्हें सबक सिखाना हमें आता है. जी मैं सुन लिया सारा. हाँ मत बोलो. No, the question is, मत करना हमारे सामने. The question is,
पैंट पहनने के पैसे नहीं है, आटा है हमारे यहाँ पे पैंट कर रहे हो। शर्म नहीं आ रही है, बार-बार बदतमीजी के लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन ने इनकी पैंट उतार दी, आपसे बड़ी चीन ने इनकी पैंट उतार दी अर्नब। इनके पास पैंट खरीदने के पैसे नहीं है, आपके साथ कपड़े चुराते हैं इधर उधर से, यहाँ पे आके बकवास कर रहे हैं। कटोरे से बाहर आ जाओ, बकवास से बाहर आ जाओ। डॉक्टर खान, let me tell you, नहीं, डॉक्टर खान, हम perfectly sensible debate कर रहे हैं, but this language was first used by Hamid Khan, and I want to tell you, नहीं, one minute, हम बहुत तहजीब के साथ बात कर रहे हैं, मगर आप भी समझ लीजिए कि अगर कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट इस तरह की अश्लील भाषा का प्रयोग करेगा, we will hit him back. You can't get away anymore. This language was used by Hamid. Hamid, you can come back to the debate. Hamid is back on the debate. But I tell Hamid Khan, have a sensible debate. Have a sensible debate. Don't do this kind of, the kind of language which you use right now. I don't appreciate it. Please come back on the subject. There is no need to use this kind of language. Okay. Yes, please don't. Even if you are used to doing it in Pakistan, don't do it here. Thank you. No. Thank you. Thank you. Okay. The only thing is that you can live in a cuckoo's land where you think that, anybody you will blame as the ISI agent and, the world will accept it. No, you have done too much false propaganda against ISI. The whole world knows your narrative, your EU disinfo labs. Everybody knows what Srivastava group is doing, sitting in Delhi and Mumbai, and how they are making the false information to the United Nations, how they are giving false information to the European Union, how you built up the whole fabricated and false narrative. The whole world knows about it. Secondly, if you think that this guy is being extradited to... But you just tell me, is Tahawwur Rana from the Pakistani army or not? One minute. Hamid, instead of making a speech, we are only... See, one minute. Can I tell you one thing, Hamid? Can I tell you one thing? Why are you showing so much interest in his extradition? Can I just... Yeah, so that's the exact point. The point here being, Colonel Shailendra Singh, if they have nothing to do with Tahawwur Rana, why are they in panic over the extradition? Why is their consulate from Washington writing to their consulate in Los Angeles saying, please do something, stop him from being extradited? I have the notes. Colonel, I have the note. You are making I have the note. False documents. I have shown the communication. Your government has not contradicted what I put out. So I must be right. We really don't care. Khan Sahab, मैंने आपको just one minute. No, 1 minute. हामिद खान जी एक बात कहना चाहता हूं आपको. आप सबको पता है हामिद खान जी, आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री का एक शौक है और गौरव को भी पता है. अब तक पता नहीं कितने इन्होंने स्टेटमेंट्स, प्रेस रिलीज कर दिए रिपब्लिक टीवी के नाम लेकर, है ना? इनकी आदत है. अर्नब गोस्वामी दिस, रिपब्लिक टीवी दिस. नो, माय क्वेश्चन टू यू इज, रिपब्लिक टीवी कह रहा है कि ये नोट हमारे पास है, आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री उसका खंडन क्यों नहीं कर रही है? व्हाई आर यू नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग मी, कर्नल शैलेंद्र सिंह? इफ व्हाट आई एम पुटिंग आउट इज रॉन्ग, दे शुड काउंटर इट. आप काउंटर कीजिए कि रिपब्लिक टीवी गलत कर लगा रहा है. हामिद भाई, आप बोलिए. सुन लीजिए हामिद भाई, सुन लीजिए. हामिद भाई, मैंने आपको अच्छे से सुना. आप चारों मेरे करीबी दोस्त हो, काफी काबिल हो, लेकिन मैं आप चारों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि हम लोगों को आज अपने टॉपिक से हटना नहीं है. दैट इज राना. और राना फॉर वट एवर रीजन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट. मैं कहता हूं, मैं गौरव जी से डिसएग्री करता हूं कि इंडिया शुड सेलिब्रेट. द वर्ल्ड मस्ट सेलिब्रेट, द ह्यूमैनिटी मस्ट सेलिब्रेट, पाकिस्तान ऑल्सो मस्ट सेलिब्रेट कि एक टेररिस्ट अपनी जगह पर लगाया जा रहा है. अरे भाई, आप चार मेरे वो लोग हो जो अच्छी बात कर सकते हैं, आप करने को तैयार नहीं हो. मैं कह रहा हूं, आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्यों नहीं आप में से एक आदमी बढ़ के कह सकता कि यस, ही इज अ टेररिस्ट, ही हैज डन समथिंग रॉन्ग, ही शुड बी पनिश्ड, ही इज नो मोर अ पाकिस्तानी. बिकॉज पाकिस्तानी टेररिस्ट होने का तगमा आप मत लगवाइए, आपके बेनिफिट में नहीं है. दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. मैं आपको बचा रहा हूं. देखिए जंजुआ साहब जो है ना, जंजुआ साहब, मैं आपको एग्री कर जाऊंगा आप जो भी बोलेंगे, क्योंकि आप एक फौजी हैं.
अभी आप लोगों ने जब बात करी कि वो कैप्टन था, वो कैप्टन किसमें था मैं अब आपको बताऊं। इमेजिन कितनी क्रिमिनलिटी है कि वो डॉक्टर था, ही वॉज अ डॉक्टर ऑल्सो। जान बचाने वाला आदमी जान ले रहा है, क्यों उसे पाकिस्तान का तगमा दे रहे हो? किस लिए उसे पाकिस्तानी बोल रहे हो आप? पानी का गिलास तो पी ले। एक मिनट जंजुआ जी, पहले एक एक करके बोले, 1 by 1 फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड। मैं ये कहूंगा 1 by 1 फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड। मेजर जंजुआ प्लीज, मेजर जंजुआ प्लीज। तो फिर जो अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं या जो दूसरे साहब कह रहे हैं, आप जब उस किसी भी शख्स का नाम लेके उसको ISI से जोड़ेंगे और उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जोड़ेंगे और फिर मुझे कहेंगे कि मैं कह दूं कि ये है तो वो है, आप खुद अपने आप को देखें। वो जोड़ नहीं रहे, वो बिल्कुल जोड़ नहीं रहे, आप गलत हैं। वो बोल रहे हैं कि आपकी एम्बेसी क्यों लिख रही है, क्यों उसके फेवर में लिख रही है, क्यों उसे मॉनिटर करने को बोल रही है। कर्नल साहब मैं ये कह रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट यार हद हो गई, गलत कैसे? एक मिनट, अभी राजा फैसल ने बोला कि वो पाकिस्तानी आर्मी का है, बात खत्म है। राजा फैसल ने अभी माना स्क्रीन पे कि पाकिस्तानी आर्मी का है। फैसल when राजा फैसल agrees he is from the Pakistan army, इसको कौन फंसा रहा है भाई? अमेरिकन कोर्ट्स कह रही है कि वो टेररिस्ट है, इंडिया कह रहा है एक्सट्राडिट करो, पाकिस्तान परेशान हो रहा है कि उसको एक्सट्राडिट क्यों कर रहे हो? और भाई साहब एक बात बताओ, आमिर खान साहब, आमिर खान जी टेल मी वन थिंग, आमिर खान जी मेरी बात सुनो, वो एक मिनट मेरी बात तो सुन लो सर। बात यह है कि वो जो तहव्वुर हुसैन राणा है वो एक पाकिस्तानी नेशनल है, वो पाकिस्तानी फौज में था, ये राजा फैसल साहब कबूल कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 वो कनाडा गया। पॉइंट नंबर 3 ही इज नाउ इन कस्टडी इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पॉइंट नंबर 4 वो लश्कर तैयबा के साथ उसके सीधे ताने बाने जुड़े हैं, उसको अमेरिकन गिल्टी मानते हैं। अमेरिका ने जो भारत ने एविडेंस प्रेजेंट करा, अमेरिका ने उसको एक्सेप्ट करा। एंड 7th पॉइंट इज अमेरिका कह रहा है कि जी हम वापस भारत भेज रहे हैं। 8वां पॉइंट ये है कि आप लोग पैनिक कर रहे हो। अब इसमें केस गौरव ओनली मेजर जंजुआ प्लीज रिस्पॉन्ड टू गौरव। नहीं मेजर जंजुआ प्लीज ऑन द स्क्रीन, ओनली मेजर जंजुआ वर्सेस 4। या हामिद एक मुझे चांस देना, हामिद मुझे बोलने देना जरा। Hamid, if you allow me, Raja Faisal, if you allow me. First and foremost, there is no doubt about it, and I am not going to sit here and make apologetic statements. पहली तो बात ये है कि if he's a terrorist, I believe that if a judicial process has been followed and he has been found guilty of terrorism or connections to terrorism, he should meet his fate, point blank, period. ये मेरी स्टेटमेंट अब अर्नब गोस्वामी पिछले अगले 2 हफ्ते चलाएगा। तो अर्नब और गौरव आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए आप कह रहे थे ना वो मानेगा नहीं। मैं क्या चलाऊंगा? एक मिनट जंजुआ साहब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। पूरा भारत ये प्रोग्राम देख रहा है। जंजुआ साहब मेरी बात सुनिए। जंजुआ साहब मैं आपसे आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बात सुनिए। आपको सवाल कर रहा हूं। देखिए जंजुआ साहब, ये है कि मेरी बुरी आदत है, छोटे से ही जब से मैं छोटा था, स्कूल में था, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी। मैं कभी कुछ चीज सुनता हूं ना तो मेरे दिमाग में रह जाती है, वो कभी निकलती नहीं है और मैं बाद में उसको रिप्रोड्यूस करता हूं। बाकी सामने वाले लोग, आप जैसे लोग चौंक जाते हैं कि इसको याद कैसे रहती है। आप ये जर्नलिज्म में मुझे बहुत ये इसका फायदा हुआ है। आपको मैं बताना चाहता हूं, ये पाकिस्तानी 26/11 के बाद है ना, मैं दूसरे चैनल का एडिटर था, वहां पे आके कहते थे देखो कौन है। पहले कहते थे तहव्वुर राना कोई है ही नहीं, पहले कहते थे पाकिस्तानी तहव्वुर राना है ही नहीं, फिर कहा हमारा उसके साथ क्या लेना देना। अभी कह रहे हैं कि अगर उसने कुछ गलत किया हो तो उसको फांसी दो। एक मिनट, मगर जंजुआ जी ये भी तो हो सकता है ना कि जब वो दिल्ली आए, है ना, जैसे गौरव आर्या कह रहे हैं इनको हम VIP ट्रीटमेंट देंगे और इधर आके सबको वो कह देंगे कि आपका क्या रोल था। किसी का नाम ले सकते हैं, ये भी कह सकते हैं मेजर जंजुआ ने मेरे को इन्वॉल्व थे इसमें, कोई भी इन्वॉल्व था। आपके बड़े बड़े पॉलिटिशियन, आपके बड़े बड़े जनरल, उनका नाम लेंगे ना और हम उस वीडियो को दुनिया भर के सामने रखेंगे। यू कैन नो, आई एम ट्राइंग टू यू, आई एम जस्ट सेइंग टू यू 1 मिनट सर।
I'm saying you can't, you don't have deniability. Arnab, do you I'm want saying to he's not Imran Khan whose face you can remove from your World Cup team. स्टेटमेंट दी अर्नब, मैंने तो ओपनिंग स्टेटमेंट दी कि इज गिल्टी, वी बिलीव इन द जुडिशियल प्रोसेस एंड दैट हैज बीन फॉलोड, ही इज बीन फाउंड गिल्टी पीरियड. बट फिर बात ये आती है, एप्पल्स को एप्पल से कंपेयर करें ना. हमने भी तो आपका एक सर्विंग कमांडर पकड़ा हुआ है, कुलभूषण यादव, सर्विंग कमांडर फ्रॉम द नेवी. आप लोग हमारी same old. lost that case in International Court of Justice. We have lost it. मैं मेजर जंजुआ से एक बात पूछना चाहता हूँ. What is this? मेजर जंजुआ से एक बात पूछना चाहता हूँ. तकलीफ हो गई, अभी तकलीफ हो गई. कहाँ पे केस चला है कुलभूषण जाधव के ऊपर? कहाँ पे केस चला है सर, ये बताइए जरा. कुलभूषण जाधव की बात कर लेते हैं 2 मिनट के लिए विद अर्नब्स परमिशन. कहाँ पे केस चला है उसके ऊपर, ये बताइए. तो जनाब कहाँ पे चलाना था? पाकिस्तान में. पाकिस्तान बताइए हुजूर, कहाँ पे चला है केस? तो पाकिस्तान में आपने उसको मिलिट्री कोर्ट से पनिशमेंट दी थी डेथ की. और तो आप एक मिनट, जहां पे पकड़ा नहीं गया. एक मिनट सर, एक मिनट. जो आपने उसको ईरान से किडनैप करवाया, आपके पास रत्ती भर प्रूफ नहीं है, इसलिए आप लोग गए और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से खाली हाथ वापस आए हैं. पहली चीज, आपके पास रत्ती भर प्रूफ नहीं है. और आज मैं बोल रहा हूं, मैं आज एक आपको बात बोल रहा हूं कि आप जो कहते हैं ना कि उसका इकबालिया बयान है, राजा फैसल साहब को भेजें यहाँ पे इकबालिया बयान, तो मैं निकाल दूंगा इनसे. ये बोलेंगे मैं इमरान खान हूं. ईरान से आपके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, यू हैव सो गुड रिलेशंस विद ईरान, एंड यू वेंट टू इंटरनेशनल. सर आप ब्लेम कर रहे हैं, हमारे पास कोई एविडेंस होगी? ब्लेम आप कर रहे हो, तोहमत आप लगा रहे हो, एविडेंस आपके पास होनी चाहिए. You see, one minute. Gaurav, I'll tell you one thing. The problem with the Pakistanis is, I'll tell you. Raja, Gaurav Bhatia is also on the debate. Ek minute. Raja Faisal and Gaurav Bhatia. And I'm going to come to Saurabh Shukla in a minute. I'd like Gaurav Bhatia versus all the Pakistanis. Gaurav Bhatia is good enough to take on all the Pakistanis. Gaurav Bhatia on one side, ladies and gentlemen, all the 4 Pakistanis on the other. And I just want to say one thing to the Pakistanis before I hand you over to the able hands of Gaurav Bhatia, that you remember, we never forgive and we never forget. Today you are weak, you're bankrupt, you're broken, you're going to be on the FATF list, nobody is going to spare you. China has given you up. Good opportunity for you. Go and attack us. You are a pariah nation. You have nowhere to go. You're a disgrace. You're a disgrace as a nation. Anyway. But I will not forget. I will not forget. 100 hours I had anchored on a program when 26/11 happened. I will not forget that 166 people died. I will not forget that 108 people died on reaching the hospital. I will not forget that 68 people died from bullet injuries. I will not forget that 30 people died from blast injuries. I will not forget the 10 people who had blast injuries and bullet injuries. And I will not forget the blood you have on your hands. You have blood on your hands. I will not forget. And Tahawwur Rana will reveal your names. In war on terror. Tahawwur Rana is going to reveal the names of every Pakistani involved. Because we have the Kulbhushan Jadhav. Get ready. And we will never forget. So worried. Gaurav Bhatia is on the other side now. Gaurav Bhatia, over to you. You know, I want to first of all say that Mr. Jhanjua's statement is to be welcomed, Arnab, because we have nothing to fear. He said apples have to be compared to apples. Mr. Jhanjua, I just want to tell you one thing. India and Pakistan both presented their case before the International Court of Justice. Barring one judge, all of them felt that the trial that was given to Kulbhushan Jadhav wasn't fair, rules weren't followed, his, defense also was not recorded properly, and therefore they ruled in favor of Kulbhushan Jadhav. It was a military trial. You compared it to the other trials. Now, Tahawwur, I can tell you, we are a country which... The man was not on holiday. Please, he was can you hear me? Can you hear me? And he was active. Can you hear me? Raw member. Sir, don't shout. He was from Indian Navy. Otherwise, what do you I will expect from change us? my response tactic. Mr. Bhatia, what do you expect from us? Please don't shout. हमको No, उसको don't shout. यहाँ पे You get your turn. I heard you. नहीं देंगे ना. Please.
सुनिए, अच्छा मैं अब आपको ये बताता हूँ, सुनिए, हम वो देश हैं जो आप इनको छोड़िए तहव्वुर राना को, जावेद मियादाद के समधी दाऊद इब्राहिम को भी यही लाएंगे और गाड़ देंगे। तुम देख लेना, बदतमीजी करते हो, फटीचर छाप, तुम कंपेयर कर रहे हो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 थप्पड़ पड़े थे और मुंह पे सूजदार भी है। 15 जजेस they gave a verdict against Pakistan because you are a terrorist nation, you are a rogue nation. Otherwise, tell me, what Arnab read to you, why is your Consul General interested in knowing the development related to Tahawwur Rana? Second, why does the memo say that share future steps with us? And last but not the least, why are you closely monitoring the case if you have nothing to do with him? अजमल कसाब के तार कहां से जुड़े? पाकिस्तान से। ओसामा बिन लादेन कहां मिला? पाकिस्तान में। सारे के सारे जितने आतंकवादी हैं कहां मिलते हैं? आपके देश में बच्चा पैदा होता है, हमारे यहाँ डॉक्टर इंजीनियर बनता है, लॉयर बनता है, आपके आतंकवादी बनता है। मम्मी कहती है एक और आतंकवादी आया है। अरे आप खुद शर्म नहीं आती? अपने गिरबान में झांकिए। और मोदी जी है घुस के ठोकेंगे ladies and gentlemen, a historic moment is approaching us. घुस के ठोकेंगे तुम्हें। As you can see, my Pakistani guests are in a bit of panic today. Saurabh, you are seeing this. Saurabh, you are seeing this. Saurabh, आप देख रहे हैं, when you were in Washington a few days back, my friend, a few days back, a few days back, our friend Saurabh was in Washington. It's really an influential country. We told America give Tahawwur, they are giving us. Arnab, I'll tell you, allow me to speak. The reason why they are really rattled and why the Pakistani embassy in Washington is writing all these notes is because Pakistan's global role as the supporter, sponsor of terrorism, and that of Pakistani army and the Pakistani state will get exposed again. And I must tell you the importance of this extradition. Tahawwur Rana assumed a third country passport. Despite that, the US government and US President Joe Biden and his entire administration, on request of India's security establishment, has persuaded that Tahawwur Rana should be extradited, and they're worried because if you are a reporter based in New York, you must know when did he get the nationality of Canada? Trying to tell the mission here to do something. You are desperate because the role of Pakistani क्या Canada कर रहे हैं? generals will be exposed. क्या Canada कर रहे हैं? Like what is Pakistan? No, 1 minute. Games of deceit. On one hand, you are out with a begging bowl, trying to tell the world that you don't have money and you're spending. एक मिनट Saurabh, can I intervene? He served Pakistan. अरे 1 minute, Raja, let me. First of all, I'll tell you one thing. हमारे हिंदी में एक शब्द है, उसको कहते हैं गौरव ठहराव, कंपोजर, ग्रेविटास। ये पाकिस्तानियों में ठहराव क्यों नहीं है? ठहराव हो, इस तरह से बात कोई ठहराव था अर्नब। कोई बात नहीं, आप बात कर रहे हैं मेरे साथ, लोग देख रहे हैं आपको। ठहराव हो, ये क्या है? हमें देखिए, गौरव को देखिए, कोई ठहराव हो आपका? Right, am I wrong? Is this a way to talk? हमें बोलने नहीं दे रहे हो। When he was jumping on your seat, was that composure? नहीं, मैं आप अभी जंपे कर रहे थे अर्नब, आप अपनी वीडियो तो देखा करो यार। कर देते हैं आप लोग। अपना प्रोग्राम तो मैं ये कह रहा हूँ करण साहब, मैं कह रहा हूँ गौरव। अच्छा गौरव मेरे पुराने मित्र, मेरे कॉलेज के दोस्त, मेरे पुराने मित्र, मेरे कॉलेज के दोस्त, मेरे रिपब्लिक नेटवर्क में सहयोगी गौरव आर्य और हम टीवी पर हैं। गौरव, 1-2 सवाल करते हैं इनको।
और मेरा पहला सवाल है, कहते हैं पाकिस्तानी नहीं है, तो कसाब ने बोला था कि कैसे एलईटी राजा बाजार है कोई रावलपिंडी में, वहां से एक रिक्रूटमेंट करती है। एक मिनट, ये वो भी कॉलेज के दोस्त थे। मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ, आप इधर घबराए हुए। गौरव एंड आई हैवंट इवन स्टार्टेड। गौरव, एलईटी टेररिस्ट मोहम्मद आमिर had confessed to ISI links. मोहम्मद वकार अवान confessed. डेविड हेडली revealed. डेविड हेडली ने कहा था how the ISI control the लश्कर. Zabiuddin Ansari revealed the ISI's involvement in 26/11, and Kassav revealed how the LET operates stalls at Raja Bazar, Rawalpindi, and there they carry out the recruitment. These are not things that we have said. These are things which the Pakistanis have confessed. अब अर्नब मुझे बोलने दीजिएगा, ठहराव देखिए, हमारा भी सब्र देखिए, हमें बोलने दीजिए थोड़ा सा। आप लोग हाँ ऐसे बोलिए, हाँ ऐसे बोलिए, ठीक है, गुड। हम क्यों बैठे हैं? देखिए मसला ये है, अर्नब हमें बुलाया, कौन बोलेगा? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। ओके, I'll put गौरव भाटिया एंड गौरव आर्या ऑन एयर। आई एम मूविंग अवे फॉर अ बिट। आप मेरे को, हम दोनों को देख के घबरा रहे हैं। आप गौरव भाटिया को ले आता हूँ सामने। गौरव भाटिया एंड गौरव आर्या विल टेक ऑन द पाकिस्तानी। आप गौरव भाटिया गौरव आर्या को रखिए सामने। मैं बैक ऑफ कर रहा हूँ, आप बात करिए। आप आई एम टेलिंग वन इंडियन इज इनफ फॉर ऑल ऑफ यू। ये दो बैठे हैं बस, चलिए हो जाए। अच्छा ये बताइए, ये सारे जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट बैठे हैं, अर्नब इनसे ये पूछना है, ये 2 versus 4 is अरे एक टेररिस्ट को बचा क्यों रहे हैं? कौन बोलेंगे? क्यों बचा रहे हैं? दोनों पाकिस्तानी भतीजा लगता है या भांजा है? अर्नब, पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट आते हैं, परेशानी ये है हर आतंकवादी तो इनका रिश्तेदार होता है। आप कोई आतंकवादी उठाइए, को बोलने दीजिए, आप हमें म्यूट कीजिए, बाहर निकालिए अपने प्रोग्राम से। भाटिया को छोड़ो, भारत की बात करो। सुनो, सारे रिश्तेदार, अच्छा बोलिए तो आतंकवादी जितने तुम्हारे रिश्तेदार क्यों होते हैं ये बताओ। Why are all the terrorists your relatives? And my question to you is, Osama bin Laden was also found on Pakistani soil. Dawood Ibrahim's somebody is also on your soil. Dawood Ibrahim was also staying at Karachi. Raja Faisal is on the debate. Raja Faisal is back now. Okay, good. His entry in America was banned. Tahawwur Rana, why don't you let the court of the US decide whether he has to be extradited or not? बीजेपी के प्रवक्ता है, आपसे एक सवाल है। मैं आपको बताता हूँ गौरव, आप बीजेपी के प्रवक्ता है, आपसे एक सवाल है। नहीं, आप मुझसे सवाल ये है कि आपके, ये बताइए, मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा। आपके प्रधानमंत्री जी को उत्तर देंगे। अमेरिका में बैन क्यों किया हुआ? आज अर्नब के शो पे एक सवाल आप पूछिए, एक सवाल मैं पूछता हूँ। एक सवाल आप पूछिए, एक सवाल मैं पूछूंगा। मंजूर है? बोलिए। एक सवाल आप पूछिए, एक सवाल मैं, पता चल जाएगा कौन शेर है कौन चूहा। चले मैं पहला सवाल करता हूं। पहला सवाल मैं पूछता हूँ। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपसे ये सवाल है कि आपके जो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री हैं, उनको माजी में अमेरिका जाने से क्यों रोका गया? उनको गुजरात क्यों कहा जाता था? अच्छा, अब हमारा संतुलन खराब हो गया। जब हम बोले, सवाल किया तो हमारा दिमाग खराब। आपका दिमाग बड़ा ठीक है। देखो, ऐसा एक टेररिस्ट कह देते हैं आप लोग। टेररिस्ट देश के प्रवक्ता को जवाब देने की बाध्यता नहीं है। सुन लीजिए, मैं इतना जानता हूँ, he is a prime minister who is giving you a befitting reply and you are shit scared of the prime minister of India. श्री नरेंद्र मोदी जी का मैच आपके पास नहीं है। मोदी से कौन डरता है? स्ट्राइक। अरे छोड़ो नहीं, एक बात सुन लो, मैं बताता हूँ। मैं एक और बात बताता हूँ। एक बात, इमरान खान, आपका जो फेवरेट है इमरान खान, वो हर तकरीर में तारीफ करता है प्राइम मिनिस्टर मोदी की। वो हर तकरीर में तारीफ करता है प्राइम मिनिस्टर मोदी की। एक मिनट, आपका पाकिस्तान का बच्चा ये कह रहा है, आप कोई भी यूट्यूबर को देख लीजिए, आपके बच्चा ये कहता है कि काश हम हिंदुस्तान में पैदा होते।
ठीक है, और आप एक बात बताएं, आपका कोई भी नेता छोटी उंगली के बराबर नहीं है प्रधानमंत्री मोदी के। ये बात ध्यान रख लेना। चल ठीक है, तो यहाँ पे करके ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये सब स्टोरी मत सुनाओ। कल शैलदर सिंह, हमें बुलाया, लेकिन जिस प्राइम मिनिस्टर की आप बात कर रहे हो, डोंट बी सो अनग्रेटफुल। ये वही प्राइम मिनिस्टर है जिसने नहीं, आपको इसलिए बुलाया है कि आपकी असली हैसियत बताएं। आतंकवादियों के चचा और फूफा I think आप ही बोल रहे हैं। I just want to say, आप हाँ बोलिए। अर्नब, इनको वार्निंग दे दीजिए कि बख्शा नहीं जाएगा, मुझे मैं एक बात पकड़ा जाएगा, आप देखें और उसको सजा मिलेगी। मुझे एक लम्हा अगर आपने दमखम है, आप बचा के देख लीजिए। भाटिया साहब को मौका दीजिएगा, यही आपको बिल्कुल बोलने नहीं दिया जाएगा। पहले आप बताइए, ओसामा बिन लादेन आपकी धरती पे क्या कर रहा था? इमरान खान उन्होंने 40,000 पाकिस्तान की भूमि पर। Okay, ladies and gentlemen, I have to close the debate, and I just want to tell you that tweet 2 issue says now it is not in Pak capacity to save this Tahawwur terrorist. Ruchi Saxena 09 says Pak is in total trauma. Hemangi CPS says we will drag Tahawwur, lying and denying. This is the modus operandi of Pakistan. Ladies and gentlemen, on the other side tonight, the big AAP versus BJP debate. Why did the AAP want to talk about Manipur in the Delhi Assembly, and why were the BJP representatives marshalled out of the Assembly? Big political controversy. Back with that in a few minutes.